India's COVID situation. Now, to ensure the readiness of COVID-19 health facilities, Union Health Ministry has asked all the states and union territories to hold mock drills at all health facilities on the 27th of December. Now, penning a letter to the state's Union Health Secretary Rajesh Bhushan states that it is necessary that the requisite public health measures are put in place to meet the increase in clinical care needs due to any spurt in cases. Now, Bhushan also added, and I quote, "The objective of this exercise is to ensure operational readiness of health facilities for management of COVID-19. Now, the mock drills shall focus on checking capacity of beds, availability of oxygen, ambulance services and availability of frontline workers. The drills will also be conducted under the guidance of district collectors and officers of the health department of respective states and union territories." Now, of course, talking about why it is important that hospitals are prepared for any sort of situation to come is also it's also important to understand that India has always been prepared for the situation. Of course, throughout the pandemic, we have been investing in our medical infrastructure, and the Union Health Ministry has, of course, ensured that the preparedness is kept in all areas, in all systems. Now, of course, earlier as well, the Union Health Minister Mandavia, in fact, emphasized the fact that there must be no complacence in the entire system when it comes to ensuring that drills are taking place at time, people's cases are being tracked, they're being traced and treated, and also genome sequencing has been increased. Now, the systematic things that had to be fixed, the small loopholes that were observed during the pandemic in the last 3 years are now, of course, just being altered and bettered and improved to ensure that India is ready to deal with any sort of situation. Of course, there is no spike yet. All of the health experts and doctors are in fact saying there is nothing to worry about, no sort of concern immediately for India. But it is important, of course, to take precaution, to wear your masks, to take a precautionary dose, to take your booster doses if you haven't yet, and sort of ensure social distancing. Take all the precautions that need to be taken. Of course, everybody is aware of this. The awareness of that is quite enough at this point after 3 years, but we have to continue doing that, is what health experts are recommending, and that's what the Union Health Ministry is saying as well. I'm being joined by my colleague Naveen Nishant on the broadcast. Naveen, take us through now what the guidelines for these particular drills in hospitals are. बिल्कुल, देखिए बता दें कि 27 दिसंबर को देश के जो सभी हॉस्पिटल्स हैं उनमें मॉक ड्रिल किया जाएगा, और जो देश में हॉस्पिटल्स हैं वो कोरोना को लेकर कितने तैयार हैं, कोरोना से बचाव के लिए कितने तैयार हैं, उसका जायजा लिया जाएगा। क्योंकि चाइना की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं, और उसे देखते हुए भारत सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर जो केंद्र सरकार है उन्होंने सभी राज्यों को पत्र लिखा है, और ये भी कहा है कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो ना हो पाए। इसके साथ साथ जो वेंटिलेटर, क्योंकि हमने देखा था जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साथ ही साथ जो वेंटिलेटर होते हैं उसकी भी काफी कमी थी। तो इससे लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और कहा है कि आप अपने ऑक्सीजन की सप्लाई जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त रखें, और साथ ही साथ जो तमाम वेंटिलेटर्स मशीन है उन्हें भी फंक्शनल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना की स्थिति है चाइना में, उससे लेकर भारत पहले से ही उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसके साथ ही साथ मनसुख मांडविया ने यह भी कहा था कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले जो भी यात्री हैं जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो बाहरी मुल्क से लोग आ रहे हैं उनमें से 2% जो सैंपल साइज है उनका रैंडम आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट पर, और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इसके साथ कहीं ना कहीं जो गुलेरिया हैं, जो रणदीप गुलेरिया एम्स के पूर्व डायरेक्टर थे, उन्होंने भी कहा था कि जो भारत के लोग हैं उनमें जो इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं काफी उच्च लेवल पे है, इसलिए उनमें जो कोरोना का नया वेरिएंट है जिसे हम BF.7 कह रहे हैं उसका खतरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने अपनी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली है। 27 तारीख को देश के सभी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां मॉक ड्रिल किया जाएगा, तैयारियों का जायजा लिया जाएगा कि क्या कुछ अस्पताल तैयार है कोरोना से बचाव के लिए।
Right, Naveen, but when it comes to these drills, what exactly does that entail? You did say that the random testing will be done. Is this just for hospitals, but is it also being done in public spaces and airports? Of course, you did mention the 2% random testing, but in other public spaces as well, are these drills going to be conducted? देखिए, जो मॉक ड्रिल है वो देश के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में किए जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो लोकनायक हॉस्पिटल हो, आरएमएल हो, इन तमाम हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल किए जाएंगे ताकि अस्पताल की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल में नॉर्मली अस्पताल में एक सीन क्रिएट किया जाएगा कि अचानक 100 या 150 लोग कोरोना पॉजिटिव पहुंचते हैं, उनमें कुछ को वेंटिलेटर की जरूरत होती है, कुछ को ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है, तो अस्पताल कितना कुछ तैयार है हैंडल करने के लिए सिचुएशन, ये किया जाएगा। जो रैंडम टेस्टिंग है वो अभी के समय भारत के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं वहां पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। 2% सैंपल साइज लिए जा रहे हैं। आरटीपीसीआर जो टेस्ट के जो सेंटर्स हैं वो एयरपोर्ट के अंदर अराइवल्स जो काउंटर्स होते हैं वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। इसके साथ ही चाइना की तरफ से जो प्लेन्स आ रहे हैं, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, वहां से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेट किया गया है। वो अपने 48 घंटे पहले तक का जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उन्हें वो काउंटर पर दिखाना होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.